हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश का 4.2 अंक मंक एंड टिम्पेटो उसके मार्जिनल क्वेश्चंस इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चंस। तो मार्जिनल क्वेश्चंस क्या है? फाइंड द सेंटेंस इन विच द ऑथर एंड हिज फ्रेंड क्लेम दैट दे डू नॉट बिलीव इन मैजिक। तो आंसर यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर देखकर स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। Second question say, what do their actions show? Answer, their actions show the two they do not believe in the chanting and magic, yet they decided to try it out, convincing themselves that it did not matter just to try. Third question say, if you hear about something that fulfills your wishes, would you try it? यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, डू यू थिंक द ऑथर इज ब्रेव? Answer: Yes, I think the author is brave because he dared to go out at midnight to chant around the banyan tree to get his wishes fulfilled, knowing very well that the banyan tree belonged to his ex-principal, who was very strict. Fifth question say, how do we know that the monk was fighter? यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। Sixth question say, what opinion do you form of Mr. Screwers from the way the treats the boys discuss? तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी मिस्टर ग्रूअर्स इज लाइक अ कोकोनट, hard from the outside and tender from the inside. She seems to me a kind-hearted, patient and understanding person. बाकी का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन से, डिड द ऑथर रियली रिजॉइस ओवर हिज शोज एंड पुल ओवर? अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Answer: No, the author did not really rejoice over his shoes and pull over. He pretended to be happy so as not to hurt the feelings of his parents. It question set. The table tennis set was not new, but was a fabulous set. What does it imply? Answer: The table tennis set was not new, although it was a second hand. It was in good condition. Ninth question. Did the surprise gift really come from an Unke Munke Timpetoo? In your opinion, who must have sent the gift? Discuss. Answer: No, the surprise gift did not come from the Unke Munke Timpetoo. I am sure the surprise gift was sent by Mr. Growers. Then question 6. What is Unke Munke Timpetoo? A charm of an act of friendliness. Answer: Unke Munke Timpetoo is an act of friendliness. इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट है, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग: हार्म, हार्मलेस, हार्मफुल और हार्मलेस, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, बिलीव, बिलीवेबल, फियर, फियरलेस, दो, थॉट, थॉटफुल, विश, विशफुल, क्वेश्चन, क्वेश्चनेबल और करेज, करेजियस। सेकेंड क्वेश्चन से, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है, रोहन desperately wish for, आंसर है a table tennis set. B, Rohan and Mug enter the garden at midnight to chant around the banyan tree. आंसर है chant around the banyan tree. C क्वेश्चन से, Rohan had finished 11 rounds of the tree before Mr. Brewer discovered him. आंसर है 11. D, the table tennis set was gifted by Mr. Brewers. आंसर है Mr. Brewers. ये क्वेश्चन से, द प्रिंसिपल टर्न आउट टू बी अ वेरी, आंसर है काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग लेडी. थर्ड क्वेश्चन से, द स्टोरी हैज अ वेरी हार्ट वार्मिंग एंड टचिंग एंड. नाउ ट्राई टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी टू मेक इट साउंड वेरी फनी, फुल ऑफ हॉरर एंड मिजरी.
अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Answer. Mr. Brewer continued to look at me with a strange look in her eyes, which frightened me. बाकी का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। आंसर है मिस्टर ब्रूअर continued to look at me with a strange look in her eyes. ये क्वेश्चन का आंसर पिछले क्वेश्चन का है, ठीक है। It looks it as if she joined teasing me. I asked her whether she believed in Unke Munke Timpetoo. She said she did, but she was trying to control her lover. I wondered what had happened to her. She laughed till tears started rolling down her cheeks. She then took me into her house and played some music which she asked me to hear. The singer used the same chant Unke Munke and Timpetoo. बाकी का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। Fourthly, Unke Munke Timpetoo. I wish my wish is coming true. Try to compose two other funny magical chants that have rhyming lines. तो fee fi to per wish. Oh wish near me do come. Try to compose some more. फिफ्थ है लैंग्वेज स्टडी। तो लैंग्वेज स्टडी का आंसर है प्रीफिक्स और सफिक्स क्या क्या है वो आपको दिए हुए। ट्रांसपोर्ट म्हणजे ट्रांसपोर्ट, सॉफ्ट लैब LY मतलब सॉफ्टली, ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स है। ये क्या है ट्रायंगल, प्रीफिक्स होगा ट्रायंगल। मैड लाई मैडली, यूनिलैटरल यूनिलैटरल और सैडनेस सैडनेस। बाकी का आप यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।